networking, routing, switching, and previously I was working in Indian the prosperous ISP side. Now I'm working in enterprise network last 1 year, and that I have a huge experience in routing, switching as a MPLS, as I was in that enterprise network part. So that's my perspective is to improve myself, my knowledge, enhance my knowledge. So thank you. That's it from my side. Okay. All right. Yeah. Thanks, Apu. Thank you. Do we have Afzal in the call? No, he is not today. Okay, no worries. Manzoor, please go ahead. Yes. Hello, everyone. My name is Manzoor Patan, and I have total 10 years of experience. Basically, I do have experience in routing switching and via Cisco wireless, and also I had little bit experience of Aruba Central, Aruba ClearPass. Last organization I had worked in Wipro for Nestle project, and so my basic intention to join this course is to enhance my skills regarding network automation. So I would like to gain that as much as knowledge and apply that knowledge in current organization. So Perfect. that's it. Thank you, Yeah. Manzoor. Thank you. Yeah, thank you. Pritam, you are next. Yeah, sure. My name is Prakash Pirtam, and I have a 10-year experience in IT department and 4 to 5 years in networking. Currently, I'm serving in a healthcare industry as a network security section manager. So my intention is join to this course as manager says, enhance my skills as well as to know about the automation, how automation will help to save my time so that I can utilize my rest of time to learning another thing. That's the actual point. So I think it will help for me. Fair enough. Fair enough. Thanks, Pritam. And I remember you saying that in the last conversation as well. Yeah, fair enough. Very nice. Yeah. Okay. Do we have Alok in the call? Okay. Yogendra? I saw Yogendra's name. Okay. Not anymore. Probably dropped. Okay. No worries, guys. Okay. So thanks for the introduction. Today we are going to focus on two things. One, we are going to focus on getting the access of the content. We will keep today's session light. One thing before we go ahead, I would like to ask, are you guys comfortable with English, Hindi, or mix of it? Yes, Hindi mix would of be it. prepared, otherwise mix. Completely English will I have to manage. Let me ask that. Who do we have? Please speak up if we have anybody in the call who does not understand Hindi. Do we have anybody? Fair enough. Okay. Okay. I'll keep a mix of it. But wherever you have problems, let me know, guys. I can repeat that. ठीक है. So as I was saying, we'll keep today's session light. बहुत हल्का रखेंगे आज का सेशन. आज के सेशन में हम लोग फोकस करेंगे कंटेंट एक्सेस पे कि हम लोगों का सबका कंटेंट एक्सेस हो जाए. दूसरा हम लोग ये देख लें कि हमें लैब कैसे सेटअप करनी है. हमारी लैब कैसे सेटअप होगी. आई प्रॉमिस्ड कि हम लोग लैब अपने लोकल लैपटॉप पे भी सेटअप कर सकते हैं और लैब हम लोग GUINET की लैब भी यूज कर सकते हैं. टुडे वी विल सी हाउ वी विल सेट अप GUINET lab, and setting up lab on your personal laptop will also be similar to it, a little bit different, right? I'll tell you about it, that what you need to do on for that. Okay.
Now, first, what I need you guys is I'll share my screen and I'll show you what to do, and you guys need to follow me the way I am doing the things to get access to the content. The access to the content will be given to the people who have enrolled already. To those people, is my screen visible to everyone? Yes. Yes. Okay. All right. First thing first, guys. Please go and access this itflakes.net. This is the URL. If you guys can access, and let me know if you can see this page. Could you please share the link in the chat? Or just It's itflakes.net. It's written here. itflakes.net. Okay. It's simple. Okay. Yes. Can somebody confirm if this page is accessible? Yes, accessible. Okay. And student, we have to log in. Student login, right? No. No? Let me say. Mhm. Click on Explore Courses. Okay. You will see this page. Mhm. Scroll down and click on this enroll button here against network automation 102. Click here. Guys, you need to keep your mic mute. Ankar, sorry to interrupt. I'm not able to log into this page. You are not able to access itflakes.net. Yes, yes. Sudhir, how do I make you co-host? Sudhir, please go ahead and share your screen. Yeah. Go to this screen share. Sir, please share the link. Set. Give me a Sorry, moment. new Guys. to the more. Sir, I'm not able to find this screen share. Very new to Zoom meeting actually. No worries, no worries. Me too, no worries. Do you see my screen still? Yes, I do. Look, here is the share button. Right in the middle, do not click on this Okay, arrow, got rather it. click on this arrow. Yeah, got it. And I have sent the link in the chat as well. But Sudhir, please go ahead and share your screen. Yeah, I'm just doing That enroll, we have to fill the details. I'm sharing my screen. Yeah, now go ahead and access this URL. Yeah, click on this. Yep. Now, where did you click, Sudhir? Just say itflakes.net. Back. Yep. Explore courses. Explore. There it is. Explore courses. Okay. Scroll down. 102. Click enroll against 102. Yes. Now this is, I believe, where everyone is. Yes. I see Alok. Thumbs up, Alok. Thanks for joining in. Okay, now everyone, yes, please enroll. Okay. What is the technical exposure beginner, or what we can select it? It's not mandatory. When you are asking a question, I appreciate if you call off your name first. Apurv. Yeah, Apurv. Ask the question once again. That technical exposure, what means? It's a beginner or what? Anything we can select it, or
What do you think at the level you are? So nobody Okay, is going to challenge it. Do not worry. Yeah. it's okay. Error not found. Okay. So Sudhir, you are done for now. Just cross this and you are done. And Okay. everyone, when they see this link, then you are good. Hello, sir. Please share link. Anybody who is asking a question, I appreciate if you call your name first. I am Meghnad. Meghnad, the link is already there in the chat. जा मुनी जाऊ ना Sir, there is one error is showing not found. The request URL was not found on the server. Am I did anything wrong? Hello, go ahead, share your screen. Just a second. Sir, I enrolled everything. Also, I verified with my email. Yeah, so you just have to wait. Okay. Oh, okay. Fine. And for my screen, it is showing duplicate request. Because Authenticate. you clicked submit twice. Give me a moment, guys. I can tell you the request I have received, all the requests that I have received. I have received it for Pritam, Manjur, Sudhir, Alok, Arvind, Apurv, Pankaj. Yes. Is there anybody who has made a request, but I don't see name on the list? Anyone? I want to confirm for some of the people. Sudhir, yes, I can see. Apurv, I can see. Afzal, I think, has not joined today. Manzoor, I can see. Preetam. Okay, yes, I can see. Alok, I can see. And Yogendra, I think, is not there. Is it so? Yeah. Okay. Fair enough. I can see requests from all of you. Arvind, you have made a request, but I think you have not enrolled. Please contact Pankaj after this session, and you will have access to that as well. But the access will be holded up until you contact Pankaj and get your pre-formalities done. And same goes for Pankaj as well, Arvind and Pankaj. For rest, let us have the access done.
It will take some time, guys. Hello. Yep, go ahead. Go ahead, please ask question. Alok, do you have something? Hey, hi. Is it going to be the permanent time for this batch? This is going to be, yeah, the course is going to be 7 to 10 IST PM, 7 to 10 PM IST. That is how it is going to be. 3 hours. Saturday and Sunday, yes. When can we expect for weekdays batch? Please contact Pankaj for the same. Sure. Hello, Ankur sir. Yeah. When should we expect that the basic Python part is going to be over? Means normal syntax related, all the basic thing like function, creating logic, if else, all those things. When that part will be completed, you are asking, right? Yes. So that we start making the network related things get introduced, and Python part is going to complete it. Just for Yeah, first 2 to 3 classes, we will be having Python, basic Python completed. Hello. Okay. Thanks. Hello. Go ahead, please. This is Dipender Singh. I just want to ask, is there any roadmap of network automation? Just like first we will start the Slow. Yeah, I'm not able to catch you. Slow. Please ask again. I just want to ask, is there any roadmap of network automation? Just like first Python and other maybe I think it may be Linux required. Or is there any roadmap of any thing available? Our course outline that we are going to do in this journey is in itself a roadmap which take people from beginner to intermediate level in network automation. And then after there is another course in making, which will take people from intermediate to advanced level. It means there is only Python is available in this course. No. I'll show you the curriculum. Just give me few minutes. Let me sort out the access for the people who have enrolled. Just few minutes. Guys, my screen is visible or not? No. Okay. That's absolutely okay.
Manzoor, can you please go ahead and share your screen? Okay, 1 minute. Okay, Manzoor, if you can scroll up all the way up. हाँ, ये itflakes.net लेफ्ट पे लिखा हुआ है, उस पे क्लिक करो. स्टूडेंट लॉगिन में जाओ, राइट साइड पे. Try this. Manzoor, Manjur. No, just Manzoor. Manjur. And password as manjur123. Verify credentials. Okay. Let us just wait for the system to sync, guys. But yeah, that's okay. But I have registration request from all of you, and we will get the access to content. In the meantime, let us do this thing. Let us go ahead and look at how we will set up lab on GUI GUINET environment for our labs. Let me. In the meantime, we'll be having sync done, or probably late in the night today, and we'll be having that tomorrow available. Let me share back my screen.
Is my screen visible now to everyone? Yes. Okay, perfect. All right, guys. So what you will be having, you will be having a link that will be provided by GUINET to you to access. It will be accessed on any of the web browser. किसी भी browser पे आप access करेंगे, आप advanced click करेंगे and then proceed to racks.guinet.com. This is what you will click. Once you are here, you will be provided with a username and password. My credentials are with me. Please keep a note of the procedure, how to log in the default console. You will access, you will select HTML console and then you'll go and put captcha and then log in. Now that's wrong. Okay, give me a moment, let me just confirm. What was it? Okay, yes, I mistyped it. Again. Okay. Yeah. Okay. Okay, once you have your credentials keyed in, then you will be reaching here. We'll be having few more devices that we will add as the lab grow. The reason we do not have all the devices here, so to keep the thing simple, right? Rather, in the first three classes, all we need is Windows PC. What you will do is you will switch it on. It is already switched on for me. I'll stop it to show you how to do that. You select this and then you will see the play button. You will click on this. Once it is done, you will get the message here, Windows 10 PC started. What you will do is double click on this. Once you are doing it, you will get into a terminal window that you can see here and you can maximize it. Once you maximize it, you will be here. Just allow this. And this is where your Windows machine is starting, which we will use as a Python host. And then once you have more devices here, I'll show you how it works. Again, sorry, I'm talking a lot in English, guys. You can interrupt me and say that. हिंदी में बोलना है बीच बीच में, ठीक है? तो अभी ये वाले डिवाइस पे आप क्लिक करोगे, जब जितने भी आपके पास डिवाइसेस होंगे, अगेन द गुड फीचर इज दैट इन द सेम tab of your browser you will be having multiple devices. इस तरीके से आपके सारे के सारे डिवाइसेस खुल जाएंगे जितने भी होंगे. अभी हम लोग विंडोज 10 का वेट कर रहे हैं, राइट? ये लोड होगा. let it load. इन द मीन टाइम, जब तक ये लोड हो रहा है, लेट अस टॉक अबाउट अ बिट आपके होम मशीन पर सेटअप करने के लिए या फिर आपके रियल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे सेटअप करने के लिए जनरली हम लोग विंडोज यूज करते हैं बिकॉज पीपल आर मोर कंफर्टेबल विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बट देयर आर फ्यू यूजर्स हु वुड लाइक टू ऑपरेट लिनक्स. अगर लिनक्स ऑपरेट करना है, आप लिनक्स पे भी ऑपरेट कर सकते हो. जितना भी हम कोर्स करिकुलम में कवर करेंगे उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप विंडोज पे ही करो या फिर लिनक्स पे ही करो. देयर इज नथिंग दैट इज स्टॉपिंग फ्रॉम हैपनिंग ईदर ऑन लिनक्स और ऑन विंडोज. पाइथन इंस्टॉलेशन इज वन थिंग जो हम करते हैं लिनक्स पे भी विंडोज पे भी. सेटअप का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है लिनक्स का और विंडोज का. यहाँ पे आज हम जो कवर करेंगे वो विंडोज का प्रोसेस है, which is commonly used operating system. Do we have any Linux user in the course? Okay, everyone is Windows user then. Okay, so once that is done, guys, the first thing that we have to do is we have to install Python. How to do that? Let us open a browser here.
Come on, go. Looks like a little bit slow today. Yeah, but once it is done, चाहे आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रहे हो पाइथन या फिर इस लैब के VM पे इंस्टॉल कर रहे हो, process is going to be same. You are gonna go visit python.org. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बीच में ही पूछिएगा. Okay, once you are there, you'll go to download. This is the download section right on the landing page. Download पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे. No, डाउनलोड पे क्लिक नहीं हुआ. Yes. डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे. यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ से डाउनलोड नहीं करना है. आप नीचे देखेंगे आपको विंडोज इंस्टॉलर मिलेगा 64 बिट, this one, and it says that it is recommended. This is what you will click on. Once you click on this, you will see the download happening. Although I already have this thing installed on my machine, my VM, but yes, download folder open करेंगे. Pretty slow. And you just install it. Click run. I'll uninstall it first, and we will install it again so that you can see the all the steps. In the meantime, while it is happening, a few features of the lab. The lab will be accessible 24/7 to you. You can access the lab at any point of time at your convenience. I would still recommend that you set up lab on your laptop as well, because that will stay with you even beyond the course. All your scripts and everything will also stays with you even beyond the course. So I will highly recommend to use your own laptop to set things up, or you can use both, up to you. Lab content will be available to you again 24/7. The lab content will have, let me walk you through the lab content after we are done with the process here.
course content as well. Somebody asked for. We'll go through the course content and as well as the lab content. That how the lab is structured. Definitely not the content today. That will be covered in the classes. लेकिन कंटेंट किस स्ट्रक्चर में है, किस तरीके से हमें उसे पढ़ना है, वो सब मैं आपको आज बताऊंगा. Guys, are you okay the way we are going? As I said, today we will keep it light. We will just set ourselves up for the course. लैब कैसे एक्सेस करनी है, एनरोलमेंट कैसे होना है, लैब कैसे चलानी है, कहाँ पे चल सकती है, क्या चल सकती है, इस सब के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछिएगा. आई एम ट्राइंग टू टेल यू एवरीथिंग दैट आई कैन. या क्वेश्चन. सर मेरे लैपटॉप में खुद से लैब सेटअप किया है, तो फिर आपका जो जो पोर्टल है, तो फिर इज देयर कि मैं अगर जो अपने लैपटॉप में प्रैक्टिस करता हूँ तो फिर कुछ इशू तो नहीं है ना? मतलब आप जो बिल्कुल भी भी नहीं है, क्लास लेंगे. बिल्कुल भी ओके, नहीं है, किसी भी तरीके का नहीं है. फाइन फाइन. सर वो बेसिकली वो पोर्टल में होगा क्या? आई अभी एम दिखाऊंगा. लिटिल बिट अभी क्यूरियस. अभी दिखाऊंगा. आई नो एंड राइटली सो यू शुड बी. अभी दिखाऊंगा. मैं सिर्फ चीजों को मिक्सअप नहीं करना चाहता, इसीलिए होल्ड अप करा रहा हूँ. राइट, आई जस्ट डोंट वांट टू जंप फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक. सब खिचड़ी हो जाएगा. सो जस्ट ट्राइंग टू होल्ड माई सेल्फ अप. एक बार ये वाला इंस्टॉलेशन हम लोग खत्म कर लें, फिर मैं आपको वहीं पर लेके चलता हूँ. ओके, सर नाउ कोर्स दिस सिस्टम कैसे इज. इंस्टॉल करेंगे? सर कोर्स कैसे इंस्टॉल करेंगे? हम लोगों ने अभी who is that speaking? Can you name yourself, please? Can you सर आई call एम up your आलोक. name? Alok. मेघनाथ। Alok Meghnath. मेघनाथ है, मेघनाथ। अभी आप लोगों ने करा ना कोर्स एनरोल. आई हैव योर रिक्वेस्ट. राइट, आपने वो ये वाला फॉर्म भरा था ना, IT फ्लेक्स वाला. नो सर, नो सर। आलोक, एक सेकेंड. आलोक, आई कैन सी हाँ, दैट यू हैव मैंने भरा एनरोल. था. मैंने आलोक भरा ने था. भरा था. मेघनाथ आपने नहीं भरा था. मेघनाथ, डिड यू ज्वाइन लेट? यस सर, यस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेघनाथ, कोई बात नहीं. Connect with me after the course. I'll show you again how to do it. ठीक है? ओके, ओके, हाँ, थैंक यू। it's a small procedure. We'll do that. Okay, guys, let's get back to that कि Python कैसे install करना है. And this is the real time. आप अपने production environment में, lab environment में ये एक ही तरीके से होता है, right? So we have seen how to download Python. हम लोगों ने डाउनलोड किया है. डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे रन करना है. रन करोगे. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट विंडो. बहुत ध्यान से देखना. इसके पूरे इंस्टॉलेशन में सिर्फ यही एक स्टेप है और ये स्टेप आप लोगों को मिस नहीं करना है. इसमें आपको ये वाला जो चेक बॉक्स है, add python.exe to path, ये करना है. ये नहीं करोगे तो उसके बाद तकलीफ होगी बाद में. जिसको ऐसा नहीं है कि उसको रेमिडिएट नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, बट ट्राई टू अवॉइड इट. Okay, once that is done, then you click on install now, and that is all. Nothing else that you have to do from installation perspective. Download करना है, click करना है उस checkbox को to add it into path. सबको पता है path क्या होता है? Environment variable क्या होते हैं? किसको नहीं पता? सर नहीं देखा, मैं पता. पूछना शुरू नहीं पता. गुड, आई लाइक इट. प्लीज से इट यार, प्लीज से इट. नहीं पता. ओके, विंडोज एनवायरनमेंट में हम लोग जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वो एप्लीकेशन की अवेयरनेस किस किस फोल्डर को हो, किस किस यूजर को हो, वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे जो हम वो चेकबॉक्स हमने क्लिक किया, वो चेकबॉक्स क्लिक करने से पाइथन जहां पे इंस्टॉल होगा उसकी इंफॉर्मेशन ओएस को चली जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को. फिर आप पाइथन को कौन से फोल्डर से एग्जीक्यूट कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो
ग्लोबल आपके पूरे एनवायरनमेंट को उस चीज की इंफॉर्मेशन है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको बार बार एक फोल्डर में जाना पड़ेगा और वहां से आपको पाइथन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब ये पाइथन को एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब होता है, इसके ऊपर हम आएंगे, बात करेंगे, लेकिन ये तकलीफ बन जाती है लेटर ऑन। सो ट्राई टू अवॉइड इट बाय नॉट फॉरगेटिंग click on that checkbox in case आप भूल जाते हो, राइट, वी ऑल आर ह्यूमंस, वी विल मेक मिस्टेक। आप भूल जाते हो तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने किया था, आपको इस इंस्टॉलर पे दोबारा क्लिक करना है। दोबारा क्लिक करके आपके पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, अनइंस्टॉल कर दें और दोबारा से इंस्टॉल कर लें उसके उस चेकबॉक्स को क्लिक करके। सर पाथ से अनइंस्टॉल करना होगा तब दोबारा ये सेटअप होगा। क्या पाथ से अनइंस्टॉल करेंगे उसके बाद ही होगा, नहीं तो डायरेक्ट इंस्टॉल कर देंगे तो ऑप्शन नहीं आएगा। अगर डायरेक्ट इंस्टॉल कर दोगे तो आपके एक स्पेसिफिक फोल्डर से पाइथन एग्जीक्यूट होगा एंड दैट विल बिकम अ लिटिल बिट प्रॉब्लम। तो आपको वो चेकबॉक्स जो मैंने दिखाया था उस चेकबॉक्स को क्लिक करना है। मैंने बोला कि अगर आप भूल जाते हैं उस चेकबॉक्स को क्लिक करना तो कोई बात नहीं, इसका पूरा इंस्टॉलेशन हो जाने दीजिए जैसे मैंने किया। क्लोज कीजिएगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करिएगा दोबारा और रन कीजिएगा। जब आप रन करेंगे तो आपके पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और फिर एक बार दोबारा रन कर दीजिए। आपको फ्रेश रन करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐड पाथ का। ठीक है, यस नो। ओके फिर भी अगर किसी का नहीं हो पाता मेरे को बताइएगा, दैट विल बी ओके, विल डू इट टुगेदर। ओके सर। ठीक है जी। अच्छा, तो दिस इज हाउ पाइथन इज इंस्टॉल्ड। अब पाइथन इंस्टॉल्ड है तो नेक्स्ट स्टेप डेफिनेटली वी वांट टू टेस्ट इट। सबको क्रॉस कीजिएगा, क्रॉस करेंगे, अपनी कमांड प्रॉम्प्ट विंडो खोलिएगा। कमांड प्रॉम्प्ट विंडो खोल के यहाँ पे आपको कमांड डालनी है पाइथन 3-v, or rather what you can do is, if this thing happens, right, once this is done then you just राइट पाइथन 3, और पाइथन 3 लिखते ही अगर आपको आपका वर्जन दिखाई देता है, हमने 3.14.6 इंस्टॉल किया था और आपको 3 एरोज दिखाई देते हैं, देन यू आर गुड, योर पाइथन इज इंस्टॉल्ड। दैट इज द ओनली स्टेप टू वेरीफाई व्हाट यू नीड एट दिस मोमेंट। इससे निकलने के लिए आप एग्जिट और हमने पाइथन 3-v क्यों किया था, इसकी वजह क्या थी करने की? पाइथन वो जो पहली वर्जन देखने के लिए, वो वर्जन देखने के लिए कमांड थी। यू नीड नॉट इससे टू पहले डू दैट। चलाई जाती जो पहली कमांड थी, फर्स्ट कमांड जो थी। हाँ हाँ, पाइथन-b, पाइथन 3-b आपका अर्लियर वर्जन्स में पाइथन की वर्जन देखने की कमांड होती है। पाइथन 3.14.6 में बेसिकली 3.14 में आपको वो कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये वाली कमांड चलाएंगे, पाइथन 3। ओके, ठीक है, पाइथन 3 चलाएंगे आप तो आपको यहाँ पे वर्जन दिखाई देगा। वर्जन दिखाई देने के बाद ये 3 एरोज दिखाई देंगे। अगर आपको ये दिखाई देते हैं देन यू आर गुड, दैट वेरीफाइज द पाइथन एज अ सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन योर लैपटॉप। उसके बाद आप 3 because this is the version starting from 3.14, right? यस यस, दिस 3 मेजर रिलीज। ठीक है, Okay. उसके बाद आप यहाँ से निकलने के लिए एग्जिट, स्टार्ट पैरेंथेसिस, एंड पैरेंथेसिस, राउंड पैरेंथेसिस यूज करेंगे एंड यू जस्ट प्रेस एंटर। यू शुड बी बैक टू योर कमांड प्रॉम्प्ट। वेरी सिंपल नॉर्मल प्रोसीजर। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा, हम python.org पे गए, वहां से हमने पाइथन का पैकेज डाउनलोड किया फॉर विंडोज। वो पैकेज डाउनलोड करने के बाद हमने उसे इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद हमने उसे वेरीफाई किया इस तरीके से। यहां तक कोई सवाल? No. ओके, ठीक है। कल की क्लास में आप सब लोगों के पास पॉड होगा और यही काम कल आप सब लोग अपने पॉड्स पे अपने आप करेंगे। अगर आप अपने पास अपने लैपटॉप पे ये
काम करना चाहते हैं आप आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। whenever you need you can start setting up your lab। इससे ज्यादा कुछ मत करिएगा, जब मैं आपको बताऊंगा चीजें उसके हिसाब से आगे बढ़िएगा। वंस वी रीच टू अ स्टेज, उसके बाद चीजें आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग के सेटअप में आप मेरे साथ चलिएगा, उसके बाद आप कुछ इधर उधर जाके बाकी की चीजें टेस्ट करना चाहते हैं, आई वुड लव दैट, डू इट, बट स्टार्टिंग के सेटअप को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, वो हमें फिर लॉन्ग टर्म के लिए हमें परेशानी बन जाएंगे। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल इंस्टॉल पाइथन। एक बार ये पाइथन इंस्टॉल हो गया, उसके बाद फिर हम पाइथन के बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। नाउ आई विल गो एंड बेसिकली शो यू कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या होगा। हमारे कोर्स कंटेंट की बात हुई थी। ओके, कोर्स कंटेंट वी विल सी अगेन इन अ बिट। हमारा कोर्स जो हमें कंटेंट, जब हमारा एनरोलमेंट जो आपने किया है जब वो थ्रू हो जाएगा तो आप लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने का आपका जो प्रोसीजर होगा, आप itflix.net पे जाएंगे, स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको वो यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। जब आप यूजर नेम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, वो आपको आपके जीमेल जो आपने अपना नॉट जीमेल, जो भी आपने अपना ईमेल आईडी डाला है वो वेरीफाई कर दिया है आपने ईमेल आईडी। वो वेरीफाइड ईमेल आईडी पे आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप उसमें डालेंगे। आप जैसे ही डालेंगे आप यहाँ पे लैंड करेंगे, जो अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। डू यू सी दिस? इज इट? या, आई थिंक सो। डू यू सी दिस नेटवर्क ऑटोमेट एक्स? Yes. ओके, सो दिस इज यू विल सी। यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे तो देखिए कोर्स आपका पूरा का पूरा किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। आई टेक दिस एज एन एग्जांपल। यहाँ पे ये आपके मॉड्यूल्स हैं, राइट? देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू विल सी, बहुत थोड़ा सा, बेस्ड अपॉन व्हाट वी हैव फ्रीज्ड फॉर दिस सेशन। तो जैसे मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको जो लिंक मिलेगा वो आपका लिंक होगा थ्योरी का। यहाँ पे आप अपने टॉपिक्स की थ्योरी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारी थ्योरी पढ़ेंगे, राइट? उसके बाद जैसे ये डेटा स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में यहाँ पे ये वेरिएबल्स की थ्योरी आएगी, जो हम अपने सेशन में कवर करेंगे। वी विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स, बट यू विल बी, वंस वी टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स, उसके बाद आपके पास जब सेशन खत्म हो जाएगा, you can look at all that stuff, you can read all this stuff and see it। तो आपके पास रेफरेंस के लिए ये सब कुछ, आपके नोट्स की बात कही थी, तो ये सब कुछ आपके पास रहेगा, that you can do। इसके बाद बात आ जाती है, ये हमने थ्योरी करी, तो हर एक टॉपिक की हम यहाँ पे थ्योरी करेंगे। थ्योरी के बिल्कुल साथ लैब्स दी गई हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको लैब्स मिलेंगी। ये आपको यहाँ पे लैब दिख रही है इसकी, तो हर टॉपिक की यहाँ पे लैब होगी। जो वर्जन आप देखेंगे वो हर हर लैब के यहाँ पे आपको 3 बटन भी दिखाई देंगे, जो अभी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको 3 बटन दिखाई देंगे। एक बटन होगा आपका ये वाली लैब को व्यू करने के लिए, एक नेक्स्ट टैब में। एक बटन होगा आपका डाउनलोड करने के लिए, और एक बटन होगा इस कोड को कॉपी करने के लिए। 3 बटन आपको दिखाई देंगे। तो जितनी भी लैब्स हैं वो सब आप डाउनलोड भी कर सकते हो। एक साथ सारी लैब्स डाउनलोड मत करना, कोई फायदा नहीं है, बट आई हैव दैट ओपन इफ यू वांट टू पुट दैट एफर्ट। ठीक है, तो जब आपको इसका एक्सेस हो जाएगा, आप अपनी लैब अपने आप बनाएंगे। एक एक लैब खुद से करनी है, बट इफ यू वांट टू डाउनलोड द लैब व्हिच इज रिटन हियर, यू कैन डाउनलोड इट। तीनों बटन, एज आई सेड, वो बटन आपको अवेलेबल होंगे। दिस इज मोर और लेस स्ट्रक्चर ऑफ एवरी मॉड्यूल। हर मॉड्यूल में पहला टॉपिक जो आपका होगा वो थ्योरी होगी। पहले हम उस टॉपिक को समझेंगे, उसकी थ्योरी समझेंगे कि वो क्या चीज है, और फिर हम हर एक टॉपिक की लैब करेंगे। This is the story of module 1, but the same story continues when we move to the next modules. Again, जैसे ये वाला हमारा मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में हम पहले थ्योरी करेंगे। थ्योरी करने के बाद फिर हम उस मॉड्यूल की लैब्स करेंगे, एंड वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ लैब्स टू डू। ऑलमोस्ट I think we will be doing 70-80 labs in total throughout the course. We will do a lot of labs, right? And as the topic grows more complex, we will be having more and more labs that we will be doing. Look, we have got a lot of labs to do.
ठीक है जी। स्ट्रक्चर को लेके कोई सवाल दोस्तों, कि हमारा ये जो कंटेंट का जो इतने सारे स्ट्रक्चर है वो कोड्स किस हैं, तरीके से? ये सारे कोड्स हैं, तो जो पाइथन आप सिखाओगे तो इतने सारे याद कैसे रहेंगे? या फिर जैसे कि मल्टीपल स्विचेस है, मल्टीपल अपने डिवाइस होंगे, उस पर चलाना होगा, तो याद करना पड़ेगा, या फिर इसका कुछ ऐसे शॉर्टकट है कि समझ नहीं आ रहा, मतलब कैसे इतने सारे मैंने भी देखे कोड, कैसे याद होंगे ये सब कुछ? कैसे आपने तो बनाए? क्या चीज याद करना है? कोड? जो आपने इतने सारे कोड्स दिखाए थे, काफी सारी स्क्रिप्ट थी, तो हाँ, ये सब कहीं से कॉपी करनी होती है? फिर ये मुझे, जैसे अगर मैं जब कभी करूंगा तो मुझे एक एक करके टाइप करना होगा, और टाइप करना होगा जैसे हम स्विच में करते हैं, एक वर्ड लिखते हैं और टैब दबाते हैं तो आ जाता है, क्या इसमें भी ऐसा कुछ होता है कि हमें पूरा पूरा याद ही करना पड़ेगा? और मुझे कैसे पता है चलेगा उस टाइम कि नेक्स्ट ये वाली लाइन लिखनी है? आपने, मैं एक लाइन बोलता हूँ आपको, ठीक है? हम्म, आप मेरे पीछे उस लाइन को दोहराइएगा। ठीक है। मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ। ठीक है? आपने ये लाइन मेरे पीछे दोहराई, अब मेरे को बताइए कि क्या आप इस टाइप की कोई और लाइन बोल सकते हैं? इस टाइप की बहुत सारी लाइन होगी। बिल्कुल, कोई एक बोलिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ या हाँ, एनसीआर में रहता हूँ, राइट? इस हाँ, टाइप की लाइन हो गई, हाँ। ठीक है? अब मैंने आपके साथ ये वाली एक्सरसाइज क्यों की? मैंने आपके से ये वाली एक्सरसाइज ये की कि आपने ये वाली जो दूसरी लाइन बोली, जो मैं अज्यूम कर लेता हूँ, आपने दूसरी लाइन बोली कि मैं एनसीआर में रहता हूँ, ये ठीक है। वाली लाइन आपने कहाँ पे याद की? कहाँ पे मैंने पढ़ी थी, याद कहाँ नहीं पे करी। याद की थी? मैंने याद नहीं करी। आपने आपके याद नहीं, क्वेश्चन को लेकर। मैं बताता हूँ, आपने याद नहीं की। क्यों आपने याद नहीं की? क्योंकि इस लाइन के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, हम्म, राइट, इस लाइन का एक एक शब्द, इस लाइन का एक एक लेटर, एक एक मात्रा, आपने वो सीखा था, कभी स्कूल में वो सीखा था, राइट? और फिर आप हम्म, उसे प्रैक्टिस करते रहे। आप हम्म। प्रैक्टिस करते करते उस चीज को सीखते सीखते आज आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि आप कोई भी लाइन अपनी बना के अपनी सोच से बोल सकते हैं, राइट? आई इज एम दैट एग्री राइट? विद यू। मैं इस बात पर पूरी तरह सहमत हूँ। तो मुझे मेरी पूरी लाइफ लगी इस चीज को करने में, बात समझ। और यही वो चीज है क्या? इसको भी तो मुझे अपनी पूरी डेली लेट मी लाइफ में फिनिश, उतारना मे आई पड़ेगा। नो योर नेम? प्रीतम। प्रीतम, okay, so now the point is, let me finish. हम अभी हाफ वे हैं। तो प्रीतम, अभी बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि आपको पूरी लाइफ लगी, और वो लाइफ में जैसे जैसे आप बढ़ते गए आपको उसकी एक्सपर्टीज आती गई, राइट? यू आर डूइंग बेटर एंड बेटर ऑन योर लैंग्वेज, राइट? सो जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दैट इज अगेन अ लैंग्वेज, राइट, जिसके हम बेसिक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने कोई भी लैंग्वेज लैंग्वेज पढ़ी थी, इंग्लिश या हिंदी, फिर हमने धीरे धीरे उसको उससे लेटर्स लिखने सीखे, उससे एसेज लिखने सीखे, पेजेस लिखने सीखे, हमने वो सब कुछ सीखा, एंड नाउ वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ इट। सेम थिंग दैट विच विल गो हियर। हम लोग पाइथन एज अ लैंग्वेज सीखेंगे और उसके एलिमेंट्स को सीखेंगे कि उसके एलिमेंट्स को जोड़ के हम कुछ कंस्ट्रक्टिव कैसे बनाते हैं। एक्सपर्टीज कैसे आएगी, इसकी दो चीजें हैं प्रीतम। इफ यू रिकॉल व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम, वी डू नॉट हैव टू बी सॉफ्टवेयर डेवलपर। हम लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपर लेवल की एक्सपर्टीज गेन करनी ही नहीं है। ओके। That is the difference we have in the languages that we have learned over the years, like English and Hindi, and how we are learning Python. English, Hindi में भी हम लोगों ने, let me ask that, are you an expert of Hindi? लिटिल बिट। Are you sure? थोड़ा बहुत हूँ। आप जरा से भी नहीं हो, हम में से कोई भी नहीं है दोस्त। हिंदी का लिटरेचर उठा के पढ़ोगे ना, समझ समझ ही नहीं नहीं आने आएगा। का है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली समझ ही नहीं आता हूँ। इट्स आई वुड से बहुत बड़ी बात है ये बोलना कि आप हिंदी के एक्सपर्ट हो, या फिर मैं बोलूं मैं हिंदी का एक्सपर्ट हूं। हमें कुछ भी नहीं आता, राइट? सो सेम थिंग, ठीक है? उस चीज को समझो, एनालॉजी को समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है प्रीतम आपने।
तो इसमें हम जब पाइथन की बात करते हैं, अगेन हम लोगों को एक्सपर्टीज हासिल ही नहीं करनी है, और अब इसके दो रीजन है। ठीक है, एक रीजन ये है कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनना भाई, हम नेटवर्क इंजीनियर हैं, हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमें वही करना है, अपना कोर नहीं भूलना। और हमें ये नहीं भूलना कि हम किस लिए इसको सीख रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन रहे, हम नेटवर्क में जो सॉफ्टवेयर आ गया है हमें उसको हैंडल करना है, अपनी स्किल्स को वहां तक बढ़ाना है। तो एक लेवल तक हमें स्किल्स को बढ़ाना है। अब दोबारा से हिंदी की बात करें तो हम हिंदी के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम हिंदी के यूजर्स हैं, मे बी गुड और बैड, एंड वी आर नॉट बैड यूजर्स, राइट। हम लोग अच्छे यूजर्स हैं हिंदी के, हम अच्छे से अपनी बात का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं, बोलकर लिखकर, right? So समझ that makes us good Hindi users. Same thing goes with Python कि हम लोगों को एक अच्छा यूजर बनना है, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट नहीं बनना। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, I told you, I said that there are two things. Second thing is आज के टाइम पे उतना भी बनने की जरूरत नहीं है, because we have got AI to write. ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, हम एक बार हम लोग ये कोर्स कर लें, उसके बाद हमें कोई भी कोड अपने आप से नहीं लिखना, हमें कोड अपने आप से नहीं लिखना। हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल आ गया है एआई, हमें उससे कोड लिखवाना है। प्रॉब्लम क्या है, अगर वही कोड लिखेगा तो हम क्यों सीख रहे हैं, एंड वी कवर्ड दैट इन द लास्ट सेशन। हम लोग इसलिए सीख रहे हैं कि हमारे सामने अगर तमिल में कोई कुछ लिख दे तो होगा क्या, हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। वो वही लाइनें लिखेगा, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं एनसीआर में रहता हूं, मैं इंडिया में रहता हूं, लेकिन हमें समझ नहीं आएगा। और अगर हमें समझ नहीं आएगा तो हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे, हम वो सॉफ्टवेयर के स्किल्स जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए वो अटेन नहीं कर पाएंगे। हम पाइथन उतना सीखेंगे कि हम उस चीज को समझ सकें, लिखवाएंगे एआई से। वी आर नेवर गोइंग टू राइट इवन अ सिंगल लाइन। Does that explain, Pritam? Yeah, whatever. Okay. All right. Any more questions, guys? पूछो यार, कुछ तो पूछो, कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में यार, ये मेरे को चुप लोग सही नहीं लगते। Basically, same things we need to understand code, means how the codes are Sir, I generated. raised my hand from last. This is Khalid, I and I am raised so from. sorry. I'm so sorry. I was not looking at the screen. I will take care of it for sure. Who was it? Khalid. Khalid, please go Yes. ahead. Yeah. What is the difference between uh, Python scripting or programming and we do the PowerShell programming? So both can work, do the same thing. Like we can create like I do create Active Directory scripting, which can provide me my username, which are going to expire, which are going to have, which are going to be expired in next few months, few weeks. So what is the difference between both? If why not we do PowerShell scripting, and what's the difference between PowerShell scripting or we are doing with Python? Sorry, it's a layman question, but just I need to know by myself. Very good Thank you. question. Any question is a good question. Any question is a good question. क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ खालिद। इंग्लिश और हिंदी में क्या डिफरेंस है? It's yeah, that's I know that's the language difference. It's a how to understand or something, but both are नहीं नहीं, scripting. होल्ड लेट अस डिसाइड टुगेदर कि Okay. दोनों चीजें अलग हैं या नहीं। कंक्लूड मत करो, अब सवाल पूछा है तो जवाब दो, राइट। तो अब Both. आपके सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास एक सवाल है कि इंग्लिश और हाँ हिंदी में क्या डिफरेंस है। डू नॉट से कि मुझे पता है, मुझे समझाइए नहीं, क्या डिफरेंस है। वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, द वे ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट्स द ओनली वेयर। जहां पर इंग्लिश होगा वहां पर आपको जो इंग्लिश में बात कर रहे होंगे उनके साथ आप इंग्लिश में करेंगे, जो हिंदी और अदर में करेंगे वो उनसे आप उस पर बात करेंगे। लेकिन लेकिन अगर किसी को इंग्लिश भी आ रहा हो हिंदी भी आ रहा हो तो यू प्रिफेयर टू टॉक टू एनी लैंग्वेज बिटवीन देम, यू कैन स्विच ओवर, you can talk with them. There is no difference between these both languages, both of way of communication. Right, Khalid, and you answered your question. When it comes to Python, when it comes to C, C++, Java,
.NET and what you said, PowerShell, these all are programming languages like the different languages we have in the world. There is nothing that one language cannot do over other. However, a little bit difference when it comes to all these programming languages. Now I am not talking about language, I am talking about programming language. ये programming language लिखी जाती हैं, सारी की सारी languages किसी purpose को लेके लिखी गई. So अगर आपको embedded programming करनी है तो उस एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करने के लिए आप वीबी को प्रेफर नहीं करते, आप सी को नहीं प्रेफर करूंगा करते हो, आप सी प्रेफर बिल्कुल करते हो. ऐसा नहीं है यस वीबी में आप एम्बेडेड प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, विल लेकिन बी क्यों डिफिकल्ट will be difficult, will be non-efficient, right? क्योंकि करेक्ट आपके packages available हैं C में which you can readily use and you will be faster and efficient when you are doing embedded programming. Same thing करेक्ट when you are doing GUI programming. So GUI programming के लिए आप .NET use करते हैं, VB use करते हैं, या फिर आप पाइथन के कुछ आप पैकेजेस हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, डिजेंगो यूज करते हैं, फ्लास्क यूज करते हैं, आप ये सारी चीजें यूज करते हैं व्हेन यू आर डूइंग जीयूआई प्रोग्रामिंग. तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के डिफरेंसेस हैं, इनकी कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, एफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, एंड दैट इज व्हाट यू चूज. नाउ एक और क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं साथ में कि हमने पाइथन क्यों चूज की. पाइथन हमने इसलिए चूज की बिकॉज पाइथन इज अ लैंग्वेज दैट हैज grown to a scale that it has got so many frameworks around almost everything that humankind use, right? And around most of the things all the OEMs has adapted it. तो इसलिए पाइथन को राइट चूज किया गया. Does that answer your question? यस करेक्ट थैंक यू वेरी मच थैंक यू No worries, no worries. Happy to explain things. And Khalid, again, once more, sorry about it. आपका hand raised था, but I'll keep an eye on it. And then we had another question जो हम लोगों ने रोक दिया था. किसका question था? Somebody was asking something. We interrupted. कोई तो था यार, क्वेश्चन पूछ रहा था. नहीं पूछना. हेलो. हाँ जी. अच्छा सर, मैंने पहले भी तो एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे आपने अभी बताया तो इस रोड मैप में, तो जैसे इसमें इंटरमीडिएट लेवल तक ये फर्स्ट चलेगा, तो इंटरमीडिएट लेवल पे क्या हम सिर्फ इसमें पाइथन ही पढ़ेंगे, इसमें पाइथन स्क्रिप्टिंग वगैरह करके आएगा? Yes, we are going to use Python. Yes, that's true. And then Ansible. Ansible is one thing that we will cover. So there are a lot of topics. Look, यहाँ पे देखो, आपके क्वेश्चन का probably यहाँ पे आंसर होगा, whoever is asking. And there was another question, another gentleman also asking about this. ये वाला क्वेश्चन भी यहीं पे आंसर होगा जो अभी पूछा है कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे and about the course content. देखो, सबसे पहले हम लोगों का मॉड्यूल 1 आता है जहां पर हम लोग बात करते हैं बेसिकली लास्ट सेशन में भी जिस चीज की हम लोगों ने बात की है, वी टॉक्ड अबाउट नेटवर्क ऑटोमेशन क्या होता है, उसकी जरूरत क्या है, व्हाई इट मैटर्स, व्हाट इज द कोर्स रोड मैप, एंड वी आर गोइंग टू कवर द कोर्स रोड मैप एनीवेज हियर एज वेल. लैब टोपोलॉजी, डे जीरो कॉन्फिग, राइट? वंस वी आर डन विद द पाइथन, this basically this module, once we are done with this, तो उसके बाद हम लोग लैब टोपोलॉजी और डे जीरो कॉन्फिग पे आ जाते हैं, क्योंकि राइट आफ्टर दिस वी विल jump into using Python to connect with the network devices. ठीक है. मॉड्यूल 2 में हम पाइथन के एसेंशियल्स सारे करते हैं, राइट? यहाँ पे अगेन, और ये वाला मॉड्यूल करने के बाद आप कोई पाइथन के एक्सपर्ट नहीं बन जाते. और ध्यान रखना, जो मैंने बात कही थी, बार बार इस बात को मैं दोहराऊंगा, बार बार दोहराता हूँ, एक्सपर्ट बनना नहीं है. डू नॉट ट्राई, वो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आज के दौर में. इन टुडेज इरा, please do not try to be a software expert, right? What we will go through is these basics, and then we will be having enough things in our hand so that we can start using Python in network automation. Gradually, if there are more things that will happen, we will learn those as well. But this is what which will give us a
excellent kickstart. We will end this module with a project. यहाँ पे हम लोग एक project बनाएंगे at the end. Then after we will get into device connectivity. हम लोगों ने Python सीख लिया. Python सीखने के बाद हम device connectivity में जाएंगे कि Python को use करके device को किसी भी network device को कैसे connect करते हैं, उसके ऊपर commands कैसे execute करते हैं. Then we will do some projects about the network automation, some small projects about the network automation, which are basically called utilities. Then after we will get into reporting and documentation. Anything that you will do in the network, right, that cannot exist and should not exist actually without reporting and documentation. So you have to report, and it is not about reporting to supervisor. It is not about that. It is about having a report in your hand which tells you कि आपकी script ने ये किया. So now the thing has shifted. पहले आप कर रहे थे, उसकी एक report बना रहे थे, उसके बाद उसे business को submit कर रहे थे. अब एक machine आपके लिए काम करेगी जो आपने बनाई है, which is called automation. जब वो काम करेगी तो you would like to have a report. भाई क्या किया बता तो दो. So that is what we will cover here, that how will we create report out of the script, out of the actions taken by the scripts. वो हम यहाँ पे cover करेंगे. उसके बाद module 6, which is really a good module, जहाँ पर आप अपने projects लाके आपको जो मन है, चाहे आप अपने lab environment में या production environment में करना चाहते हैं, small scale project, not the large very complex project. आप छोटा project अपना ला सकते हैं और यहाँ पर हम students को assist करते हैं वो project बनाने में. So basically it is not a course जहाँ पे हम लोगों ने कुछ पूरी तरीके से define कर दिया और वो deliver कर दिया and we are off our tracks. No, we want to do something that you think as well and you want to do. So यहाँ पे हम वो cover करते हैं. Then after we get into another topic which is called API. We cover APIs here in detail. API cover करने के बाद then we get into Ansible. Ansible cover करते हैं and then last not least is corporate scale automation. Automation तो बहुत सीख लिया, scripting बहुत कर ली, समझ आ गया क्या करना है, AI का use भी समझ आ जाएगा मॉड्यूल 1 तक. लेकिन ऑटोमेशन को एंटरप्राइज में, ऑटोमेशन को एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना इज एंटायरली अ डिफरेंट बॉल गेम. So we understand that a bit here, that how do we do that? What are the limitations? What are the things that we should take care of? वो सारी चीजों का हम मॉड्यूल 9 में बात करते हैं. मॉड्यूल 9 में हम उन सब चीजों को कवर करते हैं. So that's the curriculum. Yeah. Sir, what about the Terraform? Terraform we will cover in module 8. Ansible, with Ansible. Yeah. Okay. और बताइए. Somebody had question? All right, guys. That's fine. If there are no questions, coming back to the things, just wrapping up. आज हमने क्या क्या कवर किया है? हम लोगों ने एनरोलमेंट किया है. एनरोलमेंट, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बाय टुमारो वी विल बी हैविंग एक्सेस टू द कंटेंट. जो कंटेंट हम लोगों ने आज देखा उसके ऊपर एक्सेस होगा. हम लोगों ने पाइथन डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, टेस्ट करना देखा. हम कैसे करेंगे? टुमारो यू गाइज विल बी डूइंग ऑन योर पॉड्स बाय योरसेल्फ. और उसके बाद हम लोगों ने जो हमारा कंटेंट है उसका स्ट्रक्चर देखा कि हमारा कंटेंट किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है और हम किस तरीके से उसे पढ़ेंगे और यूज करेंगे. वंस अगेन, एनी क्वेश्चंस इन दीज टॉपिक्स? किसी को इसमें से कुछ भी समझ ना आया हो या कोई सवाल हो? सर मैंने एनरोलमेंट नहीं किया एक्चुअली, मैं लेट ज्वाइन किया था. नाम? महेंद्र सिंह. महेंद्र, आप एनरोलमेंट करने के लिए पंकज को कांटेक्ट करें. ओके सर. नेट राइट, कांटेक्ट करें, आपका हो जाएगा एनरोलमेंट. ठीक है, वहां पे कांटेक्ट करें. ओके. तो सर एक क्वेश्चन और था. जैसे मैं प्रोटीन फाइनेंस में काम करता हूँ, एनबीएफसी है. तो मेरे पास 150 फायरवॉल है. मैं उनको मैनेज करता हूँ बाय पावर सेल से. तो इसमें ऑटोमेशन क्या क्या कर सकते हैं? मतलब जैसे मैं वैन लिंक चेक करता हूँ, 300 अप्रॉक्स वैन लिंक है.
तो उनको मैं पावर सेल से चेक करता हूँ, एक बार में अप्रोक्स चेक हो जाते हैं 10 मिनट में। तो उसमें और कुछ कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेशन में आएगा या कैसे है? सिर्फ एक सवाल, इस चीज का सिर्फ एक ही जवाब है दोस्त। और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन किसी और को भी पूछना चाहिए था कि हम क्या कर सकते हैं ऑटोमेशन की कैपेबिलिटीज। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि इंसान चांद और मार्स तक पहुंच चुका है। क्या कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिटेशन। क्या ओके। करना है इज अ लिमिटेशन। ठीक है, दो 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 बातें हैं, दोबारा एक बार बोलता हूं। क्या कर सकते हैं सवाल ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं। स्काई इज अ लिमिट। जितना कर सकते हैं वाली बात नहीं है, करना क्या है वो कि हम लोग कितना सोचते हैं क्या करना है इज अ थिंग। सोचना आपको है, ऑटोमेशन की कोई कोई लिमिट नहीं है। इट कैन गो एनीवेयर, राइट। तो आपने जैसे बोला कि मैं वैन लिंक्स को 10 मिनट में चेक कर लेता हूं। अब आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। इस चीज का जवाब मैं ना दे रहा हूं ना दूंगा, राइट। क्यों, वो भी बताता हूं क्यों नहीं दूंगा। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आपको अपने एनवायरनमेंट में क्या करना है। क्यों नहीं करूंगा। मेरे को नहीं पता आपके पेन पॉइंट्स क्या है, मेरे को नहीं पता आपका विजन क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, राइट। ठीक है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का विजन, आपका विजन क्या है वो आपको देखना है। मैं आपको हेल्प करूंगा उस विजन को रीच करने के लिए, मैं आपको हेल्प करूंगा आप क्या करना चाहते हैं वहां पे पहुंचने के लिए। आई विल नॉट डिसाइड विजन फॉर यू। मेक सेंस? मेक सेंस। राइट। इट्स लाइक घर कैसे बनाना है भाई, वो आप देखो। घर में कितने कमरे चाहिए वो आप बनाएंगे, आप बताएंगे, मैं आपको बनाने में हेल्प करूंगा। ओके। ठीक है। All right, guys. All right. I think if there are no more लास्ट questions, क्वेश्चन है let's. मेरा आज के लिए। Sorry, who प्रीतम, was that? प्रीतम, हाँ प्रीतम बोलिए। इस कोर्स के बाद जैसे कि मेरे पास जो भी डिवाइसेस होंगे नेटवर्क, लाइक फायरवॉल, F5, NAC, WLC, स्विचेस, मैं उन चीजों को तो ऑटोमेट कर सकूंगा ना। तो ऐसा तो नहीं पर्टिकुलर एक ही उस पर रहेगा ये। This course is vendor agnostic. Pritam, last time हम लोगों ने Pritam, you were there in last time in our session, Yes, right? I was there. तो So मुझे do you remember we spoke about vendor agnostic approach? You यस don't. आई रिमेम्बर दैट, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये नहीं बताया था कि मेरे पास और कौन कौन से हैं वेंडर्स के, और कौन कौन से नहीं है, कि ठीक मैं है, ठीक जिस है। पे काम करूंगा। सुनने पे ध्यान दें, सुनने पे ध्यान दें प्रीतम। दिस कोर्स इज वेंडर एग्नोस्टिक। हम लोग यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक वेंडर का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, राइट। ओके। और उसके बाद आप क्या ऑटोमेट कर सकते हैं वो चीज किसी वेंडर से, किसी मॉडल से, किसी हार्डवेयर से टाइड नहीं है। आप किस तरीके से उसे स्ट्रक्चर करेंगे अपने ऑटोमेशंस को, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। ये ऑटोमेशन कोर्स आपको केपेबल बनाएगा कि आप किसी भी वेंडर के किसी भी मॉडल को ऑटोमेट कर सकते हैं जो आपको पाइथन या आपको एपीआई एक्सपोजर देता है। ठीक है। अगर वो मॉडल क्लोज्ड है देन इट विल बी अ लिटिल बिट प्रॉब्लम। इट्स नॉट लाइक दैट यू कैन नॉट डू इट देन, बट इट विल नॉट बी रिलायबल। आई वुड सजेस्ट नॉट टू डू इट। और वो सारे कोई भी वेंडर ले लो, किसी भी वेंडर का जो डिवाइसेस के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो नहीं आपको वो प्लेटफॉर्म देते, वो कम से कम ना कुछ 12 से 15 साल पुराने डिवाइसेस होंगे, कम से कम। इससे कम नहीं होंगे पुराने, कम से कम 12 से 15 साल पुराने डिवाइसेस होंगे। उसके बाद ये सारी की सारी चीजें सारे के सारे ओईएम्स प्रोवाइड करते हैं। वन मोर थिंग टू ऐड, जो हम लोग सीखेंगे ऑटोमेशन यहाँ पे करेंगे, दिस विल नॉट इवन लिमिट यू कि आपको जो ऑटोमेशन करना है वो
अगर आप एक ऑटोमेशन बना रहे हैं तो वो आप एक ही वेंडर के लिए बना रहे हैं कि सिस्को के एक स्विच के लिए बनाना है, उसी के लिए बनाना है। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, देयर इज नो सच लिमिटेशन। आप एक ही ऑटोमेशन बनाएंगे जिससे आप सिस्को भी हैंडल करेंगे, अरूबा भी हैंडल करेंगे, आप फोर्टिनेट भी हैंडल करेंगे। यू कैन डेफिनेटली डू दैट, राइट, डेफिनेटली डू दैट। हाउएवर एज आई सेड, हम लोगों को यहाँ पे लर्निंग पर्पस के लिए हमको एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में एक हम लोगों को लिमिटेड एनवायरनमेंट में काम करना है। बट to answer your question, that will it limit us? The automation limits us? No, it will not. The skills and the knowledge that you will get, it will basically open the way for you guys to do automation at any scale with any devices that you want to do. Any more questions, guys? ठीक है जी, if no more questions, let's wrap it here today. There is nothing much for you to do at this moment, but yes, as we move further, there will be definitely things you need to practice at home. I'm sure that you will do it, being serious learners, but we will go slow. We will establish the platform, understand each other a bit to the level we need to understand the course curriculum, the platform, how things operate. So today we have discussed a bit that how we are set up. Tomorrow, again, we will be having a lighter session, but we will further get deep into the things. So let's wrap up. Thanks for joining today. Let's meet again tomorrow, 7 p.m. IST. Thank you, guys. Thank you, Ankur. Thank you, Ankur. Thank you. Take sir. care. Thank you. Take care. Bye-bye. Yep. Bye.